गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबको दोबारा स्वागत है। आज हम देखेंगे इंडियन कछुआ और चाइनीज खरगोश की कहानी। राइट, ये टॉपिक मैंने चुना क्यों? व्हाई डिड आई चूज दिस टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? इफ यू सी दीज डेज there's a lot of competition coming up between India and China. A lot of places, Africa, Middle East, you know, Indo-Pacific. There's a lot of talk going on that who is the better nation and who is the nation which is going to come up as tomorrow's power. There's no doubt China is the established global power and India is the regional power of note. China is, peaked in many respects, whereas India is on the rise. And this is acknowledged. Wherever you go, you hear news of competition चाइना और इंडिया के बारे में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक लूं, इंडियन कछुआ और चाइनीज खरगोश। और दिस इज सेम टॉर्टॉइज एंड हेयर रेस। इज दैट व्हाट इट इज हैपनिंग? एंड दैट इज व्हाई आई चोज दिस टॉपिक फॉर अ पीक इनटू एवरीडे चाइना। ओके, लेट्स लुक एट some facts behind this. Look, in Project Syndicate, there was this article which came around 2010, 2011, which said The Indian Tortoise and the Chinese Hare by Kenneth Rogoff. And Kenneth Rogoff is a writer who writes with a lot of depth, with a lot of research, and even Nobel Prize laureates take his, articles and research work and quote it in their articles. So ये जो this article says something, just the heading says something. इंडियन टॉर्टॉइज और चाइनीज हेयर, और ये 10 साल पहले 15 साल पहले की आर्टिकल। उसके बाद टाइम्स का आर्टिकल ये निकला कि इंडियन टॉर्टॉइज विल ओवरटेक द चाइनीज हेयर। ये भी 2012-13 की बात है। उस वक्त के ये these were the predictions of that time. And then in Forbes 2015 की आर्टिकल है why India's tortoise may beat China's hare. By then it was quite established that China is ahead। 5 साल हो गए थे 2010 के बाद। 2015 तक चाइना का अर्थव्यवस्था बढ़ गया था। इट वॉज वेरी क्लियर दैट चाइना वॉज फार अहेड ऑफ द लूप। एंड देन दीज थिंग्स केम why the Indian tortoise may beat the China's hare. By then, people were saying China has a hare and India has a tortoise. So this is the background, and I started searching and say let's project it इस युग में 15 साल पहले, 10 साल के बाद। After all these articles came about 8 years back, 2015 के बाद है। 8 साल गुजर गए। What is the story? And the story is India is still a tortoise, China is still a hare. अब की बार या एज ऑफ नाउ ये जो हेयर जो है थोड़ा आगे है, टॉर्टॉइस पकड़ रहा है, तेजी पकड़ लिया। राइट, इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। राइट, ये जो आर्टिकल है फोर्ब्स के आर्टिकल में, राइट, फोर्ब्स के आर्टिकल में ये लिखा गया था। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग टू रीड। राइट, at the most fundamental level is a striking contrast in the structural composition of each nation's economy. In China, reflecting the country's still heavy, indeed actual growing reliance on fixed investment rather than a shift towards consumption, as habitually embodied in the party's formal pronouncements to the contrary. As a share of the GDP, the industrial sector comprises 44% and the service sector comprises 46%, with a balance in agriculture. By contrast, India
Industry accounts for 24%. Services comprises 58%. That's the difference. Illustrative on the country's emphasis on development of human capital, the key intangible asset needed for economic success in today's global marketplace. How prophetic. अब देखिए, ये 8 साल पहले लिखा गया था कि इफ यू पुट योर मनी, अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेस में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका फायदा होगा। चाइना ने अपना ह्यूमन रिसोर्सेस में इन्वेस्ट नहीं किया, उसको घाटा हो रहा है। इंडिया ने ह्यूमन रिसोर्सेस में इन्वेस्ट किया, फायदा हो रहा है। राइट। दूसरी बात, उनका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 44% है। इट्स 44% इज बिग, एंड सर्विसेज सेक्टर इज ओनली 46%। देन it has not changed. Whereas your industrial sector has started increasing, and your services sector today is about 60 odd percent. Any developed economy का जो सर्विस सेक्टर है वो बड़ा होता है, और चाइना में वो है नहीं। चाइना में ये हालत है आज के दिन। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था माइकल पेटर्स का इन द कार्नेगी एंडोमेंट, वो अगले एपिसोड में बिल्कुल विस्तार में बताऊंगा। where he was saying that China produces quite a lot. उनका एक्चुअल पिछले 3 महीने में इनका प्रोडक्शन बढ़ गया है, पर कोई खरीद नहीं रहा, ना डोमेस्टिकली ना बाहर। तो व्हाट्स द यूज ऑफ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इफ देयर इज नो ऑफटेक? देन यू लीड टू स्टैग्फ्लेशन, और उसके बारे में भी आज आगे जाके बात करेंगे। राइट। नाउ दिस इज अ वियतनामीज व्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ही इन दिस, ये जो वियतनामीज आर्टिकल में इंडिया और चाइना का पावर के बारे में कंपैरिजन, और ये भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप जरा अंदाज लगाइए। एज द नंबर वन पावर इन साउथ एशिया, राइट, ही सेज नंबर वन पावर इन साउथ एशिया, देयर इज नो डाउट इंडिया कैन थ्रेटन चाइना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन दिस वे। इसमें आउटलाइन किया कैसे कर सकता है। If India joins the anti-China coalition led by US, while also using its influence to entice smaller countries in South Asia, यानी कि छोटे कंट्री को अगर अपने पक्ष में ले ले, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, श्रीलंका, मालदीव्स, और यूएसए के साथ जुड़ जाए, राइट, the part of China's border could be controlled in a way that it is not in China's favor. बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये अपने जो बॉर्डर स्टेट्स के ऊपर अच्छा काबू रखेंगे, अच्छा दोस्ती बना रखेंगे, तो चाइना को प्रॉब्लम होगा उसके बॉर्डर में। हम तो सोचते रहते हैं कि हमें प्रॉब्लम होगा, ये वियतनाम वाला बोल रहा है कि उनको प्रॉब्लम होगा। ओके, चाइना इज कंसर्न्ड अबाउट द कोऑपरेटिव रिलेशनशिप अमंग्स्ट इंडिया, यूएस एंड जापान। ये तीनों हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि इंडिया और यूएसए मिल गया तो चाइना का पट्टा बिठा देंगे, और उसके साथ जापान भी आ गया तो चाइना इज आउटमैच्ड। स्पेशली द इंडिया यूएस रिलेशंस व्हिच मे डेवलप इन अ वे टू बिकम अ काइंड ऑफ एंटी चाइना कोएलिशन, और ये साबित हो रहा है, और प्रॉब्लम हो रहा है चाइना को। China's strategy in South Asia will always take into account the purpose of restraining and encircling India. ये इनका स्वाभाविक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, थ्रू पाकिस्तान, थ्रू श्रीलंका, किसी न किसी वो ये करते रहेंगे। China aspires to become a strong influential power in neighboring area. India is also competing for a dominant position in its surrounding area, and the surrounding areas of these two countries overlap to a large extent. इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारा एरिया ऑफ पावर और उनका अभी ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप हो रहा है आपका हिमालयन सेक्टर में, अपने नेबर्स के अंदर, उनके नेबर्स में भी। ये बात नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ बैठे हैं, आगे जाके देखेंगे हम वहां भी इन्फ्लुएंस, वी आर पुटिंग आवर इन्फ्लुएंस इन चाइना's नेबर्स which China considers its backyard. वो दिन गए, यू नो, एक जमाना था 5-6 साल पहले when China had made inroads into Bangladesh, it made inroads into Sri Lanka and Pakistan, of course.
So we were worried of string of pearls, or we didn't have a outreach into the Indo-Pacific or the Pacific part of the Indo-Pacific. Today it's not so. We have an outreach there. So as much as China यहाँ आके अपना कब्जा जमा रहा है या अपना हक जमा रहा है, हम भी वहां कर रहे हैं. So this is something which we have to realize. This article is very interesting. He says we can create problems for China on our border, on their border. तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है. हम तो यही बोलते रहते हैं कि चाइना हमारे ऊपर कुछ करेगा, चाइना ऊपर हमारे ऊपर कुछ करेगा, पर हम भी कुछ कर सकते हैं चाइना के अगेंस्ट. And that is something which I think is a very important thing. And then the fact that as much as China can do on all in the Indian Ocean, we can also do in the Pacific. Right? So these two things, Vietnam has, there's a view of a Vietnamese scholar. अमूमन हम यूएसए क्या बोलता है, ब्रिटेन क्या बोलता है, या चाइना क्या बोलता है, या ऑस्ट्रेलिया क्या बोलता है, उसके बारे में हम सोचते हैं. व्हाट ये देश भी है, बड़ा देश है. Vietnam is a very important desh, right? Okay, right. Now let's see the South China Morning Post. क्योंकि peek into everyday China है. South China Morning Post में क्या वाद विवाद हो रहा है. ये कहता है China's economic growth expected to slip from 2025. They had given out a 1 trillion yuan bonds out. पर वो जो bonds का जो that effect has gone down, and by 24 they feel that it will go down fully, and उसके बाद क्या है 25 से लेकर the GDP could slip. इनका डर है ये. आप आज के दिन कोई भी चाइना का न्यूज़पेपर, कोई भी चाइना का न्यूज़ देखे, इनका डर है कि जीडीपी नीचे जा रहा है, इनका जॉब लॉसेस हो रहे हैं, वगैरह 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 वगैरह. अगला हफ्ता मैं एक और करूंगा in which I'm going to talk of China's upward rise in a downward trajectory. Right, but that's later. So there's this news which is coming out of South China Morning Post. Then look at what's happened in the last quarter. This is in the last quarter. एक quarter का आप ये देखिए, our GDP has gone up by 7.6%. उनका डूब रहा है और हमारा जा रहा है. उनका they are not meeting. ये फर्क है. ये कछुआ और खरगोश की कहानी. कछुआ का चाल जो है धीरे धीरे चले आ रहा है आगे. और एक्सपेक्टेशन, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था इस पिछले क्वार्टर में कि हमारा जीडीपी 6.8% आगे बढ़ेगा, पर गया 7.6%. उनका अनुमान था कि 5.5 या कुछ परसेंट आएगा और वो नीचे जा रहा है. तो ये जो खरगोश है ना, थक रहा है, एक दिन सो भी जाएगा. राइट. ये भी है, हमने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड करना शुरू कर दिया. राइट. ये बोलेंगे आप, भाई चाइना के पास तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. पर तीनों के तीन वो साउथ चाइना सी से बाहर नहीं निकले. इनफैक्ट दे हैव नॉट गॉन बियॉन्ड 300-400 किलोमीटर्स आउट ऑफ द चाइनीज कोस्ट. ऑपरेशनल भी नहीं है. जब तक हमारा ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा, उनका चौथा भी आ जाएगा. बट रोल की देखिए, व्हाई इज देयर रोल डिफरेंट, आवर रोल इज डिफरेंट. हमारा रोल क्या है? टू बी अ रीजनल पावर. गल्फ ऑफ ईडन टू मलाक्का स्ट्रेट, उसके लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत है. एक एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी, एक एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल, और एक रिफिट के अंदर. नॉर्मल ये चलता रहेगा. पर अगर उनके पास 4 या 5 भी हो गया, उनको 2 तो उनका चाइना का डिफेंस के लिए चाहिए, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी. अगर एक आध अगर रिफिट में है तो एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ यहाँ आ सकते हैं, और वो भी अगर उनके पास हवाई जहाज हो. क्योंकि आज के दिन उनके पास हवाई जहाज नहीं है. ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर कैरियर तो है, हवाई जहाज नहीं. जैसे हमारा भी है, यही प्रॉब्लम है. हम भी ढूंढ रहे हैं
कि रफाल खरीदें, ये खरीदें, वो खरीदें, जो भी है वो कहानी आगे। तो सो देयर इन अ प्रॉब्लम, और so that is the military part. Now let's look at the economics, like the manufacturing. मैं अभी दो तीन लगातार तीन चार स्लाइड दिखाऊंगा जहां एप्पल जो है उसका प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ रहा है और चाइना में घट रहा है, और हर हफ्ता, हर चौथा दिन, तीसरा दिन, the third fourth day you find an article in South China Morning Post on Apple and Foxconn. That's the beauty. देखिए ये पाइड पेपर का हिसाब किताब है, राइट? I, in my view, and I've been saying this from all long, Apple is the Pied Piper of industry. जहां बड़ा आ गया, छोटे छोटे वाले भी आ जाएंगे अपने पीछे पीछे। सो हालांकि पिछले 2 साल में बहुत लोगों ने बोला कि इंडस्ट्री इंडिया में नहीं आ रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, वियतनाम जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, पर उनका एक हद, वो हद पार करने के बाद उनका और कोई चारा नहीं है इंडिया में आना है। और ये टाइम अच्छा है हमारा, धीरे करो, कछुआ की तरह धीरे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, हम अपना लक्ष्य पहुंच जाएंगे। बात यह है कि इंडिया इज नॉट इन अ रेस विद चाइना, चाइना इज इन अ रेस विद इंडिया। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। चाइना दौड़ रहा है रेस में, ये हर वक्त बोलता रहता है कि अभी आगे स्लाइड भी दिखाऊंगा इसके बारे में कि हम फर्स्ट हैं, चाइना, इंडिया पहुंच नहीं सकता हमारे पास, पर हमें कोई इरादा नहीं है कि चाइना को पार करना। हमें अपना लक्ष्य तक पहुंचने का इरादा है, और अगर वो निश्चितता है तो हम पहुंच जाएंगे। और जिस दिन हम अपना लक्ष्य पहुंच जाएंगे तो चाइना को हम साइड में रख देंगे, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, और ये हो रहा है। ओके, सो हम सब्सिडीज दे रहे हैं एप्पल सप्लायर्स के लिए, वो आके यहाँ लगा रहे हैं। ओके, सो जब वो फैक्ट्री लगाएंगे, there will be a spillover effect. They will start giving the electronics, manufacturing setup in India will explode. It will happen. It's a matter of time. Okay. By 2024 दूर नहीं है, और ये पिछले महीने का आर्टिकल है। एक साल के अंदर एप्पल आईफोन्स प्रोडक्शन विल डबल एंड फॉक्सकॉन्स आउटपुट इन चाइना टू श्रिंक। वो एक कहानी है, खरगोश और कछुआ। ओके, इंडिया jobs and investment to double, says Foxconn, as it moves away from China. All these articles have come in a matter of 14-15 days. Every third, fourth day, there's an article of this nature. I mean, ये तो सोचने वाली बात है, क्यों ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं, और वो भी चाइना से। वो इसीलिए आ रहे हैं कि उनको डर है आजकल। जो मैन्युफैक्चरिंग, जो किफायती मैन्युफैक्चरिंग है, फायदेमंद मैन्युफैक्चरिंग है, वो वहां से निकल के या इंडिया में आ रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग कोई खरीद नहीं रहा है, वो चाइना में फंसा हुआ है। आज के दिन उनको प्रॉब्लम है यूरोप और यूएसए के साथ। वो कोई इनका आइटम खरीद रहे हैं, बट जिस तरीके से पहले खरीदते थे वो हो नहीं रहा, तो इसीलिए उनका इकोनॉमी डाउन हो रहा है, मुनाफा कम है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ भी गया तो मुनाफा कम। So that's the whole idea of stagflation, which I'll touch upon a little later. Okay, Foxconn, maker of Apple iPhones, invests 1.6 billion in India expansion plan and diversification from China. तो निवेश भी आ रहा है, और वो ये निवेश वहां से आउट हो रहा है, राइट? ओके, ये है हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट। अदानी ग्रुप हैज इन्वेस्टेड इन रन ऑफ कच्छ, और वहां एक सबसे बड़ा 30 गीगावाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं। देखिए, पढ़ता हूं मैं, वंस कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट दैट इज द साइज ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर जितना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, ओके,
will supply 30 gigawatts of renewable energy. अगर ऐसे 4-5 प्रोजेक्ट लग गए तो हमारे एनर्जी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, राइट? और कहाँ हो रहा है? रन ऑफ कच्छ में। वो जमीन और किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। धूप काफी आता है, आपको बिजली मिलेगा, राइट? ओके, ये देखिए, चाइनाज लॉस इज इंडियाज गेन। ये अगर हम सोचते हैं कि फॉक्सकॉन का ही कहानी है, ये ड्रग्स, देखिए ये ड्रग मार्केट में चाइना का भी काफी हिस्सा है। हमारा फार्मास्यूटिकल्स आगे है, बट चाइना का भी हिस्सा है। उनका एपीआई बड़ा है और वो भी ड्रग्स बनाते हैं, बट आजकल वो भी यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है। हम खुद बोल सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग, वी कैन ऑलवेज से दैट लुक दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ये वो, यू विल नॉट बिलीव इट, पर दूसरा बोल रहा है, वो खुद बोल रहा है कि भाई इंडिया में बढ़ रहा है, हमारा घाटा हो रहा है। ये ऐसे नेगेटिव थिंग्स विल कम डिस्पाइट क्वालिटी, oversight concerns वगैरह, these things will come in. China will snipe at India. They will say a lot of negative things about India, but the fact remains, the fact remains that the shift is taking place. We have to recognize that, and because this shift is taking place, China is worried. Make no mistake, I have been saying this for a long time. Yeah, this is coming up quite a bit now. I've been saying this for the past 2 years that हमारा दिन आएगा, आएगा बाबा आएगा, और आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मलेशिया स्क्रैप्स वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। आप बोलोगे कि भाई चाइना और इंडिया दोनों के साथ स्क्रैप कर रहे हैं वीजा रिक्वायरमेंट्स, बट व्हाट डज इट टेल यू? China is an Asian country. It has deep relations with, Malaysia is an Asian country. It has deep relations with China, or it is on the other side. A lot of Malaysia is on the other side in the Pacific. Okay, now that country has equated India and China. बराबर समतल देख रहे हैं, उनको भी वीजा रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडिया को भी वीजा रिक्वायरमेंट। दिस इज शिफ्ट। आपका जो स्तर है वो चाइना का बराबरी में अभी देख रहे हैं सब। वो उनका जीडीपी बड़ा है, फौज बड़ा है, बहुत देश है, कारोबार बड़ा है, वो सब अलग बात है, पर आपका साथ जो रवैया है एट इंटरनेशनल सर्कल्स, पीपल आर लुकिंग एट इंडिया एंड चाइना बराबरी में आजकल। दिस इज अ शिफ्ट, ये बदलाव है। पहले ये बोलते थे कि यार इंडिया को कौन देखेगा, पर नहीं, आजकल बदलाव है, और इसका हमें वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ दिस एंड कॉन्फिडेंट। आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मनिर्भरता ही नहीं, आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम उस स्तर तक पहुंच गए। ये देखिए, ये भी है आर्टिकल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का, हाउ नरेंद्र मोदी इज इंडिया इज टिपटोइंग टुवर्ड्स ताइवान। और इस आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, तो बहुत डिटेल में दिया है किस तरीके से और शिफ्ट टुवर्ड्स ताइवान हैज टेकन प्लेस, और क्यों उनको प्रॉब्लम है। व्हाई इज चाइना हैविंग अ प्रॉब्लम? वैसे फॉक्सकॉन ताइवानीज कंपनी है, टीएसएमसी ताइवानीज कंपनी है, वो आके यहाँ फैब लगाना चाहते हैं, यहाँ सब कुछ करना चाहते हैं, वहां नहीं करना चाहते, राइट? और ताइवान इज शिफ्टिंग अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उससे क्या है कि ताइवान को एक आउट मिल रहा है, उसका कारोबार में सोचिए, उसका इकोनॉमी में सोचिए, उसके लिए कोई वॉइस है एक बड़ा देश का। You have interest today in Taiwan. So China has to think 3-4 times before it does anything to Taiwan. And they're worried. We have common. If आज के दिन हम सब बोलते हैं चाइना किसके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन ले सकता है,
या ताइवान के अगेंस्ट या इंडिया के अगेंस्ट। अगर हमारा गठबंधन हो गया तो चाइना का प्रॉब्लम है। हम आगे मिलिट्री रिलेशन चालू करेंगे और ताइवान के फोर्सेस को ट्रेन कर सकते हैं। उनके उनके लिए हम अपना अग्निवीर को भी बेच सकते हैं। कल के दिन सोच की बात है, अग्निवीर 4 साल के बाद ताइवान बेच दो, ट्रेंड सोल्जर ताइवान को मिलेंगे, ताइवान को और ताइवान उनको ले सकता है। ये भी सोच है। जस्ट थिंक, 4 साल हम अग्निवीर को ट्रेन करें और मान लो हर साल, उसके बाद हर 6 महीने उसके बाद 5-10 हजार लोग ताइवान भेज दो, ताइवान आर्मी में उनके साथ शरीक हो जाओ, ताइवान इनको एम्प्लॉय कर ले उनके आर्मी में। फिर चाइना का क्या हाल होगा? यू नो कि आगे हो सकता है ये, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये नहीं बता सकता हूं मैं, क्योंकि 4 साल पहले या 5 साल पहले ये सोच तो था ही नहीं कि इंडिया और चाइना का बराबरी होगा और बराबरी में बातचीत होगा, पर आज हो रहा है। तो ये भी हो सकता है कल के दिन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंडिया आउट, चाइना इन, अंडर न्यू मालदीव्स प्रेसिडेंट, नॉट सो फास्ट। ये भी बोल रहे हैं वो कि भाई इतना जल्दी नहीं होगा। यही सोच है ना। मालदीव्स में वो नया प्रेसिडेंट आ गया जो चाइना के पक्ष में है और इंडिया के ऑपोजिट है, और उसने ऑलरेडी बोल दिया कि अपना फौज को निकाल दो। ये वो सब बोल रहे हैं कि इंडिया को प्रॉब्लम हो जाएगा, चाइना वहां घुस जाएगा। ये खुद बोल रहे हैं कि इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। क्यों? एक तो ये जो नया प्रेसिडेंट है मालदीव को बेवकूफ नहीं है। उसको पता है कि मालदीव जो है चाइना के साथ कर्ज में डूबा हुआ है, और चाइना वालों को लेके उसके गोदी में बिठा देंगे तो कर्ज बढ़ जाएगा और वो मालदीव डूब जाएगा। दूसरी बात, नजरिया से देखे, चाइना के पास आज वो दम नहीं है कि वो अपना पैसा जाके मालदीव में लगा सकता है, मालदीव में या कहीं भी। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी उसने अपना प्रोजेक्ट जो है छोटा छोटा कर दिया। सो वहां भी प्रॉब्लम है। तो आप यू नो इसके विपरीत कोई आर्टिकल्स मैंने देखा नहीं। इज इंडिया चाइना राइवलरी ओवर मालदीव सेट टू डीपन आफ्टर ट्रूप विड्रॉल ऑर्डर्स और मोर फिक्शन देन फैक्ट? ये बोल रहे हैं कि भाई इसके ऊपर राइवलरी होगा, या इज इट अ मैटर ऑफ फिक्शन एंड इट्स नॉट अ फैक्ट? दे आर क्वेश्चनिंग दिस। विल दिस राइवलरी टेक प्लेस at all? We are thinking there will be a problem, that they'll come. They don't believe so. So there's a question mark. Okay. Now, so you have to understand where India is going. Okay. Now, let's see this. India's aim to surpass China as global South leader unaffected by its support for Israel. You forget about the support for Israel and all. पर पहले बार ले देखिए, इंडिया एम्स टू सरपास चाइना एज ग्लोबल साउथ लीडर। ये इंपॉर्टेंट है। ये उनका सोच है कि हम ग्लोबल साउथ के साथ जा रहे हैं और चाइना का नंबर काट रहे हो। वी गोट गिव लीडरशिप टू ग्लोबल साउथ। टुमारो वी आर गोइंग टू डू अ प्रोग्राम ऑन केन्या with Ambassador Gurjit Singh. Okay, what comes out very clearly, I'm sure it will come out, कि China might have the money and the transactional ability to invest into Africa and go ahead in the global south. But India has the soft power and the trust. Who brought the African Union into G20? India, not China. चाइना का तो बोलबाला ही नहीं था G20 में। Argentina was brought into BRICS through Brazil. What has happened in Argentina? अर्जेंटीना में जो जो सरकार पहले था वो बिल्कुल अभी अगेंस्ट चाइना चला गया। तो ब्रिक्स में वो एक अर्जेंटीना आ गया जो अगेंस्ट चाइना है। वो खुद लेके आए उनको और वो अगेंस्ट है।
तो आप देखिए ये जो शिफ्ट इज नॉट एक तरफा शिफ्ट, दो तरफा शिफ्ट है। हम ऊपर बढ़ रहे हैं, चाइना नीचे आ रहा है। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इन्फ्लुएंस की बात, राइट? ओके, ये तो दोबारा पहले आ गया था, ये भी आ रहा है ऐसे, ऐसे आलोचना होगा। चाइना's economic slowdown, why isn't India about to pick up the slack? उनका सोच ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग चाइना से हड़प लेंगे और विल स्नैच ऑल द मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना एंड मूव अहेड, ओके? बट दैट्स नॉट द वे वी आर गोइंग। आई हैव ऑलवेज सेड that India should grow at India's pace, not at China's pace. We should develop the way it suits India and not the way China thinks so. If we want to become another China, we'll be completely polluted. We have different problems. ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ रामराज चल रहा है। हमारा, आपको पता है, एथनिक प्रॉब्लम्स हैं, रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं, सेंटर स्टेट प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्शंस होते रहते हैं, कोई ना कोई जुमला होता रहता है, कोई ना कोई कांड होता रहता है हमारे देश के अंदर, कोई ना कोई वाद विवाद होता रहता है। और इसमें अगर हम सही तरीके से वी डोंट डेवलप, पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रॉब्लम हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बाढ़ आता है, कहीं आंधी आता है, कहीं तूफान आता है, कोई टनल में फंस जाता है। ये सब हमें देखना पड़ेगा। अंधाधुंध चाइना की तरफ, चाइना जैसे बनना ठीक नहीं है, ओके? How India is gaining ground in Indo-Pacific maritime contest with China, Indo-Pacific। और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडिया का जो रिलेशनशिप विद फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया को तो मैंने आपको दिखाई दिया, इंडोनेशिया, राइट, ताइवान, ताइवान का भी दिखा दिया आपको, जापान और साउथ कोरिया बढ़ रहा है और चाइना को प्रॉब्लम हो रहा है। सो दिस इज उल्टा हो रहा है मामला धीरे धीरे। और मैं नहीं चाहता हूं कि एक दिन में हो, मैं भी ये चाहता हूं कि 5-6 साल में हो, सो दैट आवर ग्रोथ इज सस्टेनेबल ग्रोथ। चाइना की तरह ऊपर चले जाओ और वापस नीचे आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना होगा। ये हमारा देश का व्यक्तित्व है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर नेशन इज दैट वी विल बी स्लो एंड स्टडी, कचुआ चाल, सही सलामत हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और मेरे को पूरा यकीन है ये खरगोश जो है ना सो जाएगा बीच में, ओके? चाइना इंडिया कोड ग्लोबल साउथ इन कंपीटिंग बिड टू लीड डेवलपिंग कंट्रीज। कंपटीशन है, ऐसी बात नहीं है, बट और कंपटीशन, देयर मेथड ऑफ going and trying to give leadership to global south and our method is completely different. There is influence, मनी, डेट ट्रैप वगैरह। हमारे पास तो उतना पैसा ही नहीं है, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, सबके साथ सबका विकास, ओके? नेक्स्ट, ये देखिए, Chinese construction firms in Rwanda see shrinking slice of pie as India and Turkey enter market. Competition. तो चाइना का नंबर हम रवांडा में काट रहे हैं, ये तो एक आर्टिकल है, और जगह भी हम काट रहे हैं। आई एम श्योर अगर आप कल देखेंगे, केन्या के बारे में हम बात करेंगे, 3-4 साल पहले केन्या बिल्कुल चाइना की तरफ झुका हुआ। मैं क्यों केन्या के बारे में कल बात करने वाला हूँ, और क्यों एक एम्बेसडर को लेके आ रहा हूँ बात करने के लिए, ये सोचिए। क्योंकि अफ्रीका में हमारा बात चल रहा है सही तरीके से, और वो जो नया प्रेसिडेंट है केन्या का, वो आए थे, विलियम रूटो, कुछ दिन पहले इंडिया में। हमारा प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत हुआ, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैरीटाइम ट्रेड किया। क्यों? 3-4 साल पहले कोई केन्या वाला हमारे ओर देख ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ चाइना के ओर देख रहे थे। अभी आके उन्होंने एक मैरीटाइम
MOU साइन किया है जिसमें मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट भी है। एक शिफ्ट है ये। केन्या और चाइना के बीच में कोई मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट नहीं है, पर हमारे साथ होने वाला है आगे। पहले था, अभी दोबारा शुरू होगा। खैर वो तो कल बात करेंगे, बट ये शिफ्ट है ये। जैसे रवांडा में जाके हम बोली लगा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए और चाइना का नंबर काट रहे हैं, क्योंकि उनको सबको पता चल गया उनका ना क्वालिटी है, ना सस्ता है, ना कुछ है। वो कर्ज में डुबाने वाले चक्कर। खैर, ओके, ये देखिए, चाइना, इंडिया और जापान, विच ऑफर्स द बेस्ट होप फॉर इन्वेस्टर्स इन 2024? कौन सा जगह है जहां निवेश आप अच्छा कर सकते हो? ये तुलना किया जा रहा है इंडिया का चाइना और जापान के साथ। चाइना और जापान तो बड़े इकोनॉमी है हमारे से आज के दिन, पर कल के दिन नहीं होंगे, राइट? सब बोल रहे हैं कि चाइना विल बी नंबर 2 इकोनॉमी। वो देखेंगे आगे जाके क्या होगा 5-10 साल के बाद। अगर हम सही सलामत हैं तो हो सकता है हम बात करें उसके बारे में 10 साल के बाद। सो वी हैव टू सी। सो निवेश करने वाले हैं आज के दिन, वो सोच रहे हैं कि भाई इंडिया में भी जा सकते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और निवेश आ रहा है हमारे पास, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, चाइना में नहीं जा रहे हैं। चाइना में क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां के सिक्योरिटी लॉस, उनका इंडस्ट्रियल लॉस, एस्पिनियज लॉस, उसके बारे में किसी और दिन मैं बात करूंगा। वो इतने सख्त हो गए हैं कि कोई निवेश नहीं करना चाहता। निवेश तो छोड़ो, चाइना वाले खुद बाहर जा रहे हैं, वो लास्ट में दिखाऊंगा आपको। ओके, ये देखिए, ये एक और पहलू है। चाइना रेसिस्ट रशिया प्रेशर, सॉरी, इंडिया रेसिस्ट रशिया प्रेशर टू पे फॉर ऑयल इंपोर्ट्स इन चाइनीज युआन। हमने बोला कि भाई युआन में हम सौदा नहीं करेंगे रशिया को। रशिया चाहता है कि युआन में सौदा करें, क्योंकि रशिया हैज गॉट सरप्लस रुपीस। अभी उनको ये नहीं पता चल रहा है कि कैसे खर्च करना है रुपीस को, क्योंकि रुपी का फुल कन्वर्टेबिलिटी है ही नहीं आजकल। वो बोल रहे हैं कि भाई हमें युआन में दो, हमें बोला नहीं देंगे हम। एक जमाना था जब दूसरा देश बोलता था हमें कि भाई हमें इसी इसमें पैसा चाहिए, तो हमें देना पड़ता था। वी डिडंट हैव दैट इन्फ्लुएंस टू रेजिस्ट प्रेशर। टुडे यू हैव। दैट्स अ चेंज व्हिच इज हैपनिंग इन इंडिया, व्हिच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। आज मैंने देखिए, आज के पीक इनटू एवरीडे चाइना में मैं ये ही बता रहा हूँ कि चाइना कैसे डाउन हो रहा है, इंडिया कैसे बढ़ रहा है। ये समझने वाली बात है। यू डोंट अंडरस्टैंड दिस वेल। India eyes a slice of China's maritime trade with Adani Group's new mega project. ये मेगा प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप का कहाँ बन रहा है? विजिंजाम। विजिंजाम का है केरला के तट। इंडिया में जब हम ये पोर्ट बना देंगे, तो ये जो कार्गो नीचे से जा रहा है, जो कोलंबो के थ्रू जा रहा है, और कोलंबो में भी एक पोर्ट बनने वाला है अदानी का, एक टर्मिनल में, और चाइना का एक टर्मिनल, और इंडिया का एक टर्मिनल होगा कोलंबो में, और विजिंजाम भी उतना कंपीटिंग टर्मिनल होगा, राइट? तो फिर देखिए क्या होगा। चाइना का नंबर कट जाएगा, चाइना के ट्रेड कम होगा, तो उनका मैरीटाइम ट्रेड कम होगा, पक्का होगा। वाई? अदानी और कोई भी बोले ना बोले, इज एस्टैब्लिश्ड पोर्ट ऑपरेटर। मुंद्रा पोर्ट को इतना बड़ा बना दिया उन्होंने 10-15 साल में, ये भी बना देंगे। सो देयर अ शिफ्ट वहां भी। ओके, वीवो एग्जीक्यूटिव अमंग 4 पीपल अरेस्टेड मनी लॉन्ड्रिंग। तो चाइना के जितने कारोबार इंडिया में है उनको वाट लग रहा है। दे आर ऑल बीइंग राउंडेड अप, ऑल देयर nefarious activities are being put to book. So there's a problem for China here also. कचुए और खरगोश, यही कहानी है। ओके,
एक किसी बेवकूफ ने लिखा है ये, इंडिया का। कुछ है हमारे देश में भी बेवकूफ, वो कहता है व्हाई इंडिया शुड जॉइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वो कब देख रहा है इस युग में, इस अभी ये 10-15 दिन पहले की आर्टिकल है ये, कि व्हाई शुड इंडिया जॉइन बेल्ट एंड रोड। बाकी सब भाग रहे हैं, ये महाशय ऐसे ऐसे भी हैं, इनको हमें संभालना की जरूरत है, इसीलिए मैंने दिखाया ये। ओके, राइट। ये भी है कि हाल ही में फॉरेन सेक्रेटरी, नॉट फॉरेन सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल बात हुआ था ऑन द बॉर्डर, और ये खबर आ रहा है कि अगला कोर कमांडर मीट में कुछ टेमचॉक और टेपसांग के अंदर डिसएंगेजमेंट का कुछ अच्छी खबर आए, देखेंगे। ये ना आता, ऐसे रिपोर्ट नहीं आते अगर हमारा शक्ति ना बढ़ रहा होता। चाइना रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, द डे यू हैव स्ट्रेंथ दे विल गो बैक। ये मैं 4 साल 5 साल, नॉट 4 साल, 2020 में बताया, और उसी वक्त मैंने बताया था कि चाइना वाले जाएंगे, क्यों, इंडिया विल राइज। उस वक्त बताया था मैंने। ये पी गुरुस में एक वीडियो है, उसमें मैंने बात किया था इंडिया राइज के बारे में। वही चीज मैं दोबारा पिछले महीने पी गुरुज में श्री अय्यर जी के साथ एक प्रोग्राम किया था, और मैं करता रहूंगा ये दिन आ गया है जब हमें अपने आप के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए दैट वी आर अ रीजनल पावर ऑफ कॉन्सिक्वेंस। ओके, लुक एट चाइना। अभी तक तो हम इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, चाइना का क्या हाल है। ये ग्राफ देखिए, ये उन्हीं का ग्राफ है, राइट। ये है इनका मैन्युफैक्चरिंग का ग्राफ। ये लास्ट 2024 में देखिए, लास्ट क्वार्टर में इनका मैन्युफैक्चरिंग भी डाउन हो गया। हालांकि पिछले महीने का एक रिपोर्ट है जो बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है, बट उनका ग्राफ के मुताबिक तो डाउन है। पहले देखिए 2008-10 में कहाँ था इनका मैन्युफैक्चरिंग, और नीचे कहाँ। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में एक चीज है, वॉट एवर इज बिलो 50 इज नेगेटिव, 50 के ऊपर है तो पॉजिटिव। सो इसमें देखिए इट इज बिलो 50, एंड इट इज बीन बिलो 50 फॉर द पास्ट गुड पार्ट ऑफ 1 year. 23, 24, it's going to go down. This whole 1 year, their manufacturing is also down compared to earlier times. Okay, export falls. You see exports. Last bit. Forget 21, 22 जो हुआ था. You look at 23, 24, and where is it going? It's down. It's still below zero. Negative. It's in the negative range. It's dropped 6.4%. And these graphs, ये जो ग्राफ मैं दिखा रहा हूं, ये चाइना का ऑफिशियल ग्राफ्स हैं। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का नहीं है, ये चाइना के ऑफिशियल ग्राफ्स हैं। डेटा पब्लिश बाय चाइनीज सोर्सेस। ओके, सो यू कैन सी द प्रे, किस तरीके से ये अपना खरगोश सो रहा है। ओके, चाइनीज China's economic data again under the microscope. Local authorities warned over falsifying statistics. झूठ बोल रहे हैं जिस तरीके से चाइना बोल रहे हैं। देखिए, जो भी चाइना के बाहर आता है डेटा, उसमें फॉल्सिफिकेशन ज्यादा है, झूठ ज्यादा है, बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, सबको पता है, राइट। और नाउ दैट डेटा इज अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड who's put it under the microscope? IMF, World Bank, वगैरह वगैरह, and they've been told don't falsify data, it can't be worse. So if someone says China has a huge GDP, it's grown up, ये वो, look at it with a pinch of salt. Look at it through, darkened glasses. Don't wear rose-tinted glasses to see everything rosy. Okay? Food price deflation drags down CPI from stagflation warnings. This is what I wanted to say.
Chinese experts are talking of stagflation. What is stagflation? The stagnation and inflation. Stagflation. Ask any economist. Stagflation is the worst thing which can happen. कोई बड़ा बड़ा बोल नहीं रहा, but China is under deflation and stagflation. Stagnation and deflation and stagflation. So there are problems. There are tremendous problems. ये कछुआ तो आगे बढ़ता जा रहा है, खरगोश सोने वाला है. Okay, China's property demand weaknesses weigh heavy as factory services activity dent economic recovery effect. तो प्रॉपर्टी तो हम पिछले एक साल से बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, डूब ही रहा है, और उसके साथ बाकी रिकवरी भी डूब रहा है. जब तक ये अपना प्रॉपर्टी सेक्टर को सुधार नहीं सकते, चाइना का इकोनॉमी उभर के बाहर नहीं निकलेगा, और वो होने वाला नहीं है. आज मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनका आबादी घट रहा है, वेतन कम हो रहा है, राइट, बेरोजगारी बढ़ रहा है, और ये अगला हफ्ता मैं बात करूंगा. ये सब मिला के आपका चाइना का दृश्य दिखाऊंगा. तो फिर इनका इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, रिकवरी कैसे होगा? होगा नहीं रिकवरी. ओके, जॉब्स. हाउ मच एम्प्लॉयमेंट प्रेशर इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी फेसिंग. 3 महीने पहले इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ गए थे, तो उन्होंने क्या किया? अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स देना बंद कर दिया. So we don't know what is the level of unemployment there. It must be sky high, right? So there's a problem in China today, right? And this year, 11.4 million people more coming after graduation. That they come in after graduation, and they don't have jobs. Already they're 21 plus million. Where is China going? एंड अगर ये युवकों में जॉबलेसनेस है, पढ़े लिखे लोगों में जॉबलेसनेस है, बेरोजगारी है, तो सोशल प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट इन चाइना. इफ दैट हैपेंस, वी आर लुकिंग एट अ बिगर प्रॉब्लम. उसके बारे में आज तक मैंने बात नहीं किया. मेरे ख्याल में अगले 4-5 महीने के बाद ये बात करना शुरू करूंगा. देखते हैं, 4 नहीं तो 6 महीने. पर इफ युवकों के अंदर, यानी graduates, youth of the nation, don't have jobs, social unrest is a natural outcome. If social unrest takes place, there will be political problems. So this is where the Chinese here will have to go to sleep. It will be anesthetized. China counties local debt snowballs after it hires army of civil servants. लोकल गवर्नमेंट्स कर्ज में डूबे हुए हैं, और इसके बावजूद दे आर हायरिंग पीपल टू जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एंड दे आर नॉट एबल टू पे, और भी कर्ज में डूब रहे हैं. तो रिकवरी कहाँ होगा? अगर जहां एक आदमी को आपने एम्प्लॉय करना, 10 आदमी को एम्प्लॉय कर दिया, तो रिकवरी कैसे होगा? ये जो चीजें हैं 5-6 साल 10 साल पहले हमारे देश में होते थे, 15 साल पहले, वो आजकल वो चाइना में हो रहा है, शुरू हो गया वो होना. और दोबारा, ये मेरा कल्पना नहीं है, ये इनका रिपोर्टेड न्यूज है. आप न्यूज़पेपर किस लिए पढ़ते हो? आप इसलिए पढ़ते हो कि देश का हाल क्या है, देश के अंदर गतिविधियां क्या हो रही हैं, इसके बारे में पढ़ने के बारे लिए आप बात न्यूज़पेपर पढ़ते हो. अगर चाइना का न्यूज़पेपर पढ़ने वाला ये पढ़ रहा है, तो उसका हालत क्या होगा, सोचिए. ओके, ये तो हमने देख लिया. ये लास्ट देखिए, इंटरेस्टिंग. ओके, it says gold bars and Tokyo apartments, how money is flowing out of China. Very interesting article, कि किस तरीके से चाइना से पैसा बाहर जा रहा है. तो लास्ट में बताया ना, मैं दिखाऊंगा आपको.
सोना जा रहा है बाहर, लोग जाके बाहर अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं। अभी ये तो टोक्यो के बारे में बात कर रहा था, पहले कुछ दिन पहले मलेशिया में खरीदारी हो रही थी, सिंगापुर में खरीदारी हो रही थी, इंडोनेशिया में भी जाके खरीद रहे हैं। अभी तो टोक्यो की बात हो रही है और यूएसए में भी खरीद रहे हैं। पैसा जो है, जिसके पास पैसा है चाइना के अंदर, वो किसी ना किसी तरीके से या सोना या प्रॉपर्टी या कुछ ना या कैश लेके बाहर निकल रहा है किसी तरीके से, हवाले के जरिए वगैरह वगैरह वगैरह, पढ़ाई के लिए या जो भी है वो बाहर निकलने के चक्कर में। तो मेरे ख्याल में ये सब बताने के बाद होपफुली वी शुड गेट द कॉन्फिडेंस। हमारा जो कछुआ है आगे चल रहा है, स्पीड नहीं बदला, स्पीड वही है, टिक टिक टिक, लक्ष्य पहुंच जाएगा हमारा। खरगोश सोना शुरू कर दिया, उसका लक्ष्य क्या है? पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। उसका लक्ष्य है कि सुपर पावर बनना, वो तो छोड़ दीजिए। सो दिस इज द रियलिटी। ओके, ओके। यहाँ पर आज का पीक इनटू एवरीडे चाइना खत्म होता है। मैं कुछ सवाल लेता हूँ, जो क्योंकि बहुत दिन के बाद आई हैड अ चांस कि वन टू वन आपके साथ बात करो, ये मिचोंग की वजह से। जनरल सर, यू सेड वी हैव सेंटर स्टेट प्रॉब्लम, एक्सप्लेन। आप देखिए सिर्फ यू नो बंगाल और सेंटर के बीच में, एक ही स्टेट ले रहा हूँ, तमिलनाडु और सेंटर के बीच में देखिए, सेंटर्स में जो और ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में देखिए क्या प्रॉब्लम्स है। बहुत है हमारे पास प्रॉब्लम्स, बहुत है। ये तो यू डोंट हैव टू एन्यूमरेट। ओके, या बिसी बेली बात, व्हेन विल इंडिया जीडीपी मैच दैट ऑफ चाइना? मेरे हिसाब से कभी मैच नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जीडीपी इज अ रॉन्ग फिगर। हम सब सोचते हैं कि जीडीपी होना चाहिए, जीडीपी इज अ इररिलेवेंट फिगर, इज अ इररिलेवेंट फिगर। What we should do is we should be happy as a nation. Okay, okay. Great analysis, sir. You have given us huge confidence. We should be confident, Joydeep. There's no choice. Okay. Sir, one session, tell about yourself and your stories of AVSM, VSM, PSM, please. Yeah, I got a VSM for uh, Northeast for controlling insurgency in the area which I was commanding my brigade. Uh, I got a AVSM for the progress I made in or modernizing artillery and bringing all those guns in. And PVSM is combined for everything what I did for the nation towards the end of my service. Someone felt that I did enough to get a PVSM. Okay. Right. Okay. I aspire to be an officer, sir, but have self-confidence issues with serving my appearance. How do I overcome? Your appearance. Forget everything. Self-confidence comes through knowledge. Knowledge comes through study. Training curriculum in OTA and IMA is almost the same. Don't bother. Hope you are safe. Yeah, we are completely safe. We are on the path to recovery. I mean, I must tell you, 5 दिन के बाद आज पहले बार जाके मैं अपने घर में दूध खरीद के ले आया. I went and bought myself yesterday, day before I went, I could get nothing. So today I went on my own and brought milk for myself for the next, my whole family for the next 3-4 days. So things are falling in place. Okay, fail to understand why China doesn't have more internal consumption despite huge population and decent GDP. We have low GDP yet we consume well internally. Why are they? That's the way China has grown. Chinese don't spend by nature. We all think GDP is great and all, but that GDP has gone and that money which China has made has gone to a few people.
The rich people. The bulk of the people still are poor. They don't, I mean, when I say poor, they're relatively poor that they can't consume. And their form of consumption was buying flats. You see, their form of consumption was not on, mobiles and scooters and things like that. Their form of consumption was buying flats because they felt that investment in flat is a better deal. So if you buy a flat, you'll buy paint, someone will buy paint, someone will buy a fridge, someone will buy furniture. So you consume when you buy a flat. Okay. That is gone because no one is buying flats now. They don't want to put their money there. They don't want to put their money in other places. They don't want to put their money in stocks, etc., etc. You see our mutual funds, they're booming. There it's going down the other side, right? So they won't consume. And as a result, because the manufacturing has gone down, they don't have the capability to spend because they don't have salaries, they don't have jobs. So they won't consume. That's the problem. And a large part of China's workforce was migrant labor. And these migrant laborers were always underpaid. So underpaid people couldn't consume. Whereas that's not the case with us. We have capability to consume at all levels. You can, a rich man will consume with a high branded car, and the poor man will consume with a low ended scooter. For all strata of society, we have ability to consume. We consume as per our needs. There's a difference. Okay, okay. If we make deal with China to bring CPEC from India, but POK GB will be ours, this will be great for both of us, not to fight. Look, these are all utopian ideas. If you have dealt with China, they will never do it. Okay? They will never do it. And that is why China and Pakistan are the best friends. China's closest ally is Pakistan. There's a reason for all this. And why should you get into CPEC when you can make your own CPEC somewhere else? Why do you need him? Why do you not want to get into a debt trap? Tomorrow, if he invests here and get the CPEC here, you mean to say Chinese people will come and work here and you'll be without a job? So these are all funny thinking. Don't think of these lines. Okay. Yeah, please click like. Thanks a lot, G. I suppose you're Kumar, right? Please click, all of you. Also, please subscribe to my channel. For the past 15 days, the subscription has gone down. It is stagnating. Actually, Gunner Shot is going into stagflation. I must tell you this. So I am trying my best to get back to inflation and not stagflation. So kindly subscribe. Tell your friends to subscribe. Join in. You'll get analysis which is far different from others. I beg to differ with you. We should not send our soldiers as mercenaries. I'm just giving you a scenario. I am not asking you to send, but the scenarios will come about. These are social pressures. Okay? I agree with you completely. But what if we do it tomorrow? Once Agniveers go out of service, they can go anywhere. So how can you stop them? That's the flaw of the Agniveer scheme. Okay. Yeah, that's true. Bharat needs sustainable growth. I agree. Uh, Sapphire, yeah, very nice to hear you always, sir. Do you see chances of China encroaching through Wakan corridor? Very difficult. See, it's very nice to say Wakan corridor, A corridor, O corridor, but you actually, when you go there, it's very tough terrain. In fact, yesterday I was trying to explain this only to Mr. Sanjay Dixit in Jaipur Dialogues. It is very easy to say China can go here, China can go there. If it was so easy to go, why didn't they go there in the first place? Okay, it's not easy. Okay, Sriram says China has polluted air, water, and soil in trying to become the factory of the world. We should, yeah, I agree with you completely. I come
I have always said India should grow as per its requirements, not as per Chinese requirements, not as per American requirements. We should not become the factory of the world. We don't need. We should grow our manufacturing, but increase our, uh, services. We should safeguard our environment, do water management, so we can increase our food output, so that we are a food supplier tomorrow, and that's going to be a major issue tomorrow. Watch my word. Food security is going to, in when climate change sets in, food security will be a major issue. At that time, our ability to export will be great, right? Okay. This is a nice show, right? Thank you, Kachua Karghosh show. Yeah, I agree with you completely. Uh, yeah, we want to hear something in Telugu and its meaning from you. Oh, JBJP garu ela unnaru meru? Baunnara. So the meaning is, how are you, JPG? Are you okay? And are you happy? Right. Yeah. Thank God, situation is returning back to normal. It's not fully normal. There are a lot of places where water is still stagnating, and sewerage water is stagnating. Health issues might come about, but I see the city returning to normal slowly. There are a lot of parts, and actually, I'll explain when I do the show with General Hasnain. There are a lot of parts of South Chennai which are in problem. If he can't come, I'll do a show separately on this. We'll see. I'll do an update and I'll explain to you. What happened in Chennai, the scale. Yeah, you see, that's why I said the whole problem is, it's like this. Let me put it in a very simple form. Chennai, till about 15, 20 years back, was quite a safe city. I mean, from all this, because the development had not taken place unorganized. Development was still okay. And there were certain conditions by which development was restricted. But certain things happened, which I'll explain in one of the updates in open house session. Development became unconstrained. We developed like fools. Because we developed like fools into low-lying areas, and those low-lying areas were actually the drainage for Chennai. So when water came, all these low-lying areas got filled with water. That is where the major problem is. And then, as the city expanded, or services of the city didn't expand, sewerage, water, and all that. So that is why we, in the past 5, 6 years, to 2005 onwards, we are having repeated problems of this. It is not as if these were the biggest cyclones we have seen. I have seen cyclones in Chennai from the time when I was 5 years old. Long back, there was a cyclone in which one ship came, a Polish ship, came and got grounded on the beach. And it was there. It could never be taken off. Ultimately, it was cut and taken off. I'm now going back to 80s, 70s, 80s. It's not as if we not had cyclones. Every year we have cyclones. Because of this unrestricted or unchecked growth or ill-planned growth, we are suffering. That is why I say we should not be like China. China is suffering. We are also suffered. This is a wake-up call for us. I'll go back and explain one day with what's happened in China and what can happen to us with uh, Chennai as the example. Okay. Sir, China was always suspect, but your analysis removed my confusion as it takes clue from what Chinese may. Yeah. Uh, I am a subscriber. Yeah, I'm hope you can go and subscribe to SCMP. There's no problem. Anyone can. Uh, Ask if POK and GB become part of Bharat. Will they claim? Why do you want GB and POK at this point of time? You will get 4 million, Muslims.
Is India ready to take these people on? You can't run them away. अब देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है. पाकिस्तान will have a problem. कल मैंने ये प्रोग्राम जयपुर डायलॉग्स में किया था. हमास और इनका पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है इसराइल के साथ. इतना लोगों को डिस्प्लेस कर दिया. Israel will have problems. So what will you do with this 4 million people who are in POK and Bharat? I mean GB, and they are all anti-Indian today. Most of them, political movement. So we should not look at GB and POK and all that now. Yeah. You are G, right? As China allows and Bharat slows and Bharat grows, will two changes be equal in term? No, we don't want that to happen. We are not interested. You see, China has grown to a level where probably it will take us a long time to match. So we are not looking at that. We are not looking at GDP terms. We are looking at the overall development of India. That is more important for me. Okay. Yeah, thanks a lot. We'll not go into speculation. Yeah, with all your help, I'm sure we'll be this. Yeah. Saw your video on industry tea, maybe something related, but any chance of China loosening its grip on Tibet? It will not. It will not at all because Tibet is the lifeline for China for water. The Yellow River, Hangui, and Yangtze Kiang come from Tibet. Mekong comes from Tibet, goes into China, and then goes into Indochina. It needs these rivers to control Indochina, basically Thailand, Laos, Vietnam, and Cambodia. All four countries are controlled through Mekong. Mekong, China is the upper riparian in Mekong, and it comes from Tibet. Brahmaputra water they want to take into China. Why will they give up? They'll never give it up. Okay. पहले नारा था कि मंदिर बने वही बांग्लादेश. यार कामा जी, ये मंदिर बांग्लादेश ये इधर बात मत कीजिए, ठीक है. ये भी है, सुना है जहां मोहब्बत की दुकान वहीं बर्नौली. नहीं, ये सब ऐसे बात मत कीजिए. ये चैनल में ऐसे बात चलता नहीं. मैं साफ बता रहा हूँ. आप सही बात कीजिए, अच्छी तरीके से बात कीजिए, रेस्पेक्ट एवरीवन, सबको एंड बी हैप्पी. आज एक पार्टी सत्ता में है, कल दूसरा आ जाएगा. ये कोई पक्का नहीं है कि एक ही पार्टी सत्ता में होगा, और ये भी नहीं है कि एक ही मत सोच विचार आगे होगा. हो सकता है ये भी बदली हो जाए कल के दिन. तो वी शुड, हमारा जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, इसका शक्ति यही है दैट वी रेस्पेक्ट ईच अदर, वी टॉलरेट ईच अदर, और जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास. और आप एक फौजी के साथ बात कर रहे हो जो पूरा देश को देख चुका है और पूरा देशवासियों को एक जैसा मानता है. ओके. Okay, like China is out from Myanmar through rebels and somewhat from Pakistan via TTP. Why don't we interfere in Tibet? I'm from Himachal. Yes, we should. We should interfere in Tibet. I have no doubt about it. But I don't want to interfere in Tibet the way Pakistan has been interfering in POK, or TTP is interfering in Pakistan, or China is interfering in Myanmar. We should do it in a more sensible manner. एक दूसरी बात, we already have a government in exile, दलाई लामा. वो पूरा सिस्टम हमारे पास है. जब तक दलाई लामा का सिस्टम हमारे इंडिया में है, हमारा पकड़ होगा तिब्बत के ऊपर.
इट्स अ मैटर ऑफ टाइम किस तरीके से शुरू करना चाहते हो. We should have that much grip on Tibet that China, if China tries to attack us, China should fight two wars, one on the border, one in the hinterland. That should be our aim. If China has to fight two wars in Tibet, along the borders with India and against Tibetans within Tibet, then China will lose. If you can have that capability, China पीछे हट जाएगा जिस तरीके से आजकल पीछे हट रहा है ऑलरेडी. Okay, I heard there's a Chinese radio station in Chennai that is broadcasting in Tamil. Yes, ये अ, जो यूरेशियन टाइम्स का एडिटर है बिपिंद्रा, उन्होंने बताया मेरे को. बट वी डोंट हैव अ सिस्टम कि चाइना में जाके चाइनीज में बात ब्रॉडकास्ट करें. सी ये हो नहीं सकता क्योंकि चाइना इज अ क्लोज कंट्री एंड इट इज अ चाइनीज कम्युनिस्ट कंट्री वेयर एज आवर्स इज अ डेमोक्रेसी. कम्युनिज्म इज आफ्टर ऑल यू हैव अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. यू हैड एक वक्त था 5-10 साल पहले, 10 साल पहले त्रिपुरा में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, बंगाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, आपके पास केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था. आप कम्युनिस्ट को कैसे रोक सकते हो? दे दे आर रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज. तो देयर इज अ प्रॉब्लम. वी हमारा प्रॉब्लम अलग है. डू यू थिंक चाइना विल मेक वन मोर वायरस? नो, आई डोंट थिंक सो. ओके, how easy or difficult is it from north to try and learn Telugu? It's not easy. It's not difficult. इरादा चाहिए, सीख जाता है आदमी. मेरे देखिए, when I was born, I didn't know हिंदी. मेरे घर में कोई हिंदी उतना अच्छा जानता नहीं था. पर आजकल तो मैं हिंदी में ब्रॉडकास्ट भी कर रहा हूँ. सीखने की इच्छा था, इरादा था, तो सीख लिया. Chinese factories are closing across China and economy going down. Is there chance China might start a war? No, I don't think so. I don't think China doesn't think that way, right? In fact, if you saw, अभी तक ये we were thinking that China will invade, Taiwan, but what has happened? Their president, Taiwanese president, has herself said that China will not invade Taiwan now. It is not in the horizon. Similarly here, पिछले एक साल से last encroachment they tried was in Yangtze last year, around the same time. After that, there's no action. They have internal problems. Okay. And if they have internal problems and he tries to externalize and comes to India and India gives a good kick in time, what will happen to his own power? So there is risk. It doesn't happen. What are steps to we can take to claim or reclaim? Well, it's a matter of time. It's going to have a long gestation period. Don't worry. It will happen, right? Slowly will it'll happen. You'll see as China weakens. See, historically, whenever the central power in China was strong, the outlying areas, Mongolia, Manchuria, uh, Tibet, and Xinjiang were part of China. When the central power in China weakened historically, these countries or these places raised the flag of autonomy and independence. So as China weakens, these people will start talking. So don't worry, it will happen. Yeah, why isn't it? We need to do this intelligently. I would prefer the Mukti Bahini route. Okay, but we have to do it intelligently at a time, at a point of time, uh, as our strength grows. Okay, I know. Look, when you have problems like what we have in Manipur, you can't do all this. Everything is interconnected. Okay, right. Uh, oh,
Why no generals coming on different talks since Monday with Colonel? I really don't know. There's nothing happening. What is that? What Adi does is his choice. Right? I'm very clear. Yesterday I had a general, I had an army commander. Tomorrow I'm going to have an ambassador. Well, I'm a general myself. Okay. A day after tomorrow I'll have a colonel, and the day after that this thing. I'm going to have a very interesting discussion on कि इंडिया और यूएसए के बीच में क्या हो रहा है, इंडिया एंड रशिया के बीच में क्या हो रहा है, इन रशिया और चाइना के बीच में क्या हो रहा है, रशिया और चाइना के बीच में क्या हो रहा है. दिस थिंग आई एम गोइंग टू टॉक. आई एम एक कासा डायलॉग्स कर रहा हूँ. मेरे ख्याल में 12 या 13 तारीख को आई विल गेट अ पैनल and with people who are going to Russia, who people who are going to USA, people who are this thing, and we'll have this. And उसके बाद एक म्यांमार के बारे में भी sometime later I'll have it. So we'll do all this. So it's for sure. That's for sure, right? So in my channel you'll have the best of guys. On that there's no this thing. I might call a few colonels who are good. I have no problem, but everyone. Okay, I think we've done the whole thing. Uh, uh, right. Thanks a lot. I'll come back tomorrow with Ambassador Gurjeet Singh and we'll talk about Kenya. Do join in. Till then, please get people on the channel. Okay. Yeah, India US outlook. Yeah, I agree what you're saying, Anand. Just wait till 12th. I have a panel. We'll talk with them. Okay. Okay. Till then, thanks a lot. Good evening and Jai Hind.